Hello students, welcome again. For the second part of the lesson, शटे शाटे समाचरित। अब तक हमने देखा किस तरह सियार और ऊंट नदी पार कर खेत में जाते हैं। अब उसके आगे। In the morning, fox said, मातुल, ओ अंकल, स्वच्छंदं दशांगुलानि कर्कटी रक्तांगान च भक्षय। नाउ यू ईट मस्कमेलन, cucumber and tomatoes as much as you wish. अत्र कृषकः नास्ति, here the farmer is not there. तस्य गृहम् अपि क्षेत्रेभ्यः दूरम् अस्ति, his house is also far away. उष्ट्रः प्रसन्नतया शाकानि खादितुम् आरभत. The camel started to eat the vegetables happily. तस्य उदरं विशालम् आसीत्, his stomach was very big. शृगालस्य लघु उदरं स्वल्पेन पूर्णम् अभवत्. The small stomach of fox was filled fully by eating a little. सः अकथयत्, he said, अधुना अहम् उच्चैः शब्दं करिष्यामि. Now I will make the sound loudly. भोजनस्य पश्चात् अहम् उच्चैः गायामि. After meals I sing loudly. Camel said, एतत् करणं न उचितं. This is not fair. अधुना शब्दं मा कुरु. You don't make the sound now. शृगालः उच्चैः अगायत्. The fox made the sound loudly. तस्य शब्दं श्रुत्वा कृषकः आगच्छति. Listening the sound of the farmer came. क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रं दृष्ट्वा दण्डेन तं बहु ताडयति. By seeing the camel in the field, he beat him a lot with the stick. Camel said, दुष्ट शृगालस्य धूर्तया अहम् आहतः. Due to cunning of the cruel fox, I am hurted. तदनन्तरं यदा स्वप्राणरक्षणार्थं सः नद्याः तटं प्राप्तवान्. After that, to save his own life, तदैव शृगालः तस्य समीपम् आगच्छत. When the camel went to the bank of river, at the same time the fox came near to him and laughed at him. Fox said, Matula, O uncle, दशांगुलानां रक्तांगानां च भक्षणं सरलं नास्ति. It's not very easy to eat muskmelon, cucumber, tomatoes. अपि दण्डानां स्वादः मधुरः कटु वा. How was the taste of sticks? Sweet or bitter? Camel said, O nephew, भगिनेय, अधुना अनेन प्रश्नेन को लाभः. What is use of this question? आगच्छ नदीं गच्छामः. Come, let us go to river. शृगालः पुनः वृष्टस्य पृष्ठम् आरोहत. Again the fox sat on the back of camel. उष्ट्रः शृगालं नीत्वा नदीं प्रति अगच्छत. Camel was going in the river carrying the fox. नदी मध्ये उष्ट्रः अकथयत्. In the center of the river the camel said, भगिनेय, O nephew, अधुना मम व्यसनं शृणु. अधुना मम व्यसनं शृणु. Now listen my habit. भोजनस्य पश्चात् अहं जले स्नातुम् इच्छामि. After the meals, want to take bath in water. त्वमि ईश्वरं स्मर. Now you remember the God. Fox said, Matula, O uncle, अत्र स्नानं मा कुरु. Don't bath here. जलं गम्भीरम् अस्ति.
द वाटर इज डीप, मम अत्रैव मृत्युः भविष्यति, आई विल डाई हियर ओनली। उष्ट्रः शृगालस्य निवेदनं न अशृणोत। द कैमल डिड नॉट लिसन द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉक्स। जले च उपविशत, सैट इन द वाटर। धूर्तः शृगालः अपतत, मृत्युं च अलभत। द कनिंग ऑफ फॉक्स फेल डाउन एंड डाइड। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जिस तरह सियार ने ऊंट के साथ धूर्तता से व्यवहार करने के कारण ऊंट ने भी उसके साथ धूर्ततापूर्वक व्यवहार किया, जिसके कारण सियार को मृत्यु प्राप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। स्टूडेंट्स, इस तरह छठे शाठे समाचरित यह लेसन समाप्त हो चुका है और आपको उस लेसन्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखना भी है और रिवाइज करना है।